Dear students, welcome to DM classes. As you know, in the first part of the Doctor's Word, I have discussed the first 3 units of the story, and when Dr. Raman announced that he was going to operate his best friend Gopal, his wife became excited, became rattled, became nervous, and went on asking why. What was the reason behind this immediate sudden operation? Now, to find out the reason what led Dr. Raman to operate his best friend Gopal even when he was unconscious, let us read the next 3 units. Okay, आमे वर्तमान परवर्ती 3टी यूनिट पढ़िबा। गोपाल को कहीं डॉक्टर रमन ऑपरेशन करेंगे, हठात कौन आवश्यकता पड़ला आम जानिबा। नाउ इन द 4th यूनिट we are told that Dr. Raman finally operated Gopal with the help of a nurse and assistant and the help of Gopal's eldest son. The operation was over and it was about 8 at night. The patient Gopal stirred a little, moved a little, opened his eyes a little, and according to the assistant, the pulse rate was a bit okay, and he became so excited, told Dr. Raman that he would pull through. That means his condition was going to improve. Now, Dr. Raman को तांकर असिस्टेंट तांकर सहकारी कहले सार आपण सांगर टिके सेन्स आसी से आखि खोलेनी टिके अंग परिचालना करूछंती आ तांकर जेहेतु पल्स रेट टिके इम्प्रूव करिछि मु भाबुछि से उन्नति करिवे. And what was the remark, the observation of Dr. Raman? Because he was quite experienced, he said, this pulse rate is just like a false flash up, just like a lamp which was going to be extinguished, and it throws a bright flame, a bright light. जेमिति गोटे दीप निभे पूर्व टिके उज्जवल आलोक प्रदान करे, सेमती sometimes the operated patients show some signs of recovery, some signs of survival. Tenu we should not be so much excited, and if the patient showed some steady improvement up to 2 at night, then there can be said something, and if their pulse rate was consistent up to 8 in the next morning, that means during the span of 12 hours, then he would stay for another 40 years. Dr. Raman, अभिज्ञ डॉक्टर, से तांकर असिस्टेंट कहउछंदी ए जो राति 2टा पर्यंत होछ गोटे क्रिटिकल समय, आउ एमिति तांकर पल्स रेटटा फ्लक्चुएट करिवो, आउ जदि ता परदिन सकाळ 8टा पर्यंत से सर्वाइव करूछंदी, देयर इज इम्प्रूवमेंट इन द पल्स रेट, ताले मु ग्यारंटी दे देबी जे गोपाल आउरी 40 वर्ष बंचियो. Now with this, Dr. Raman sent away his assistant to his hospital and sat beside the bed of his friend Gopal, and it was about 11 at night. You see, Dr. Raman did not take anything as his lunch. He was there even without taking coffee. He was quite anxious about the health, about the improvement of his best friend. At about 11, Dr. Raman marked that Gopal opened his eyes again and he smiled at him. बर्तमान राति 11टा हेलाणी. डॉक्टर रमन तांकर सांगर बिछना पाखरे सजिया पाखरे बसुचंदी. देखिले गोपाल टिके आखि खोलिछि एवं ताकाडे अनेकी टिके हसी दउछि. आउ से समय डॉक्टर रमन टिके देखुचंदी देयर इज स्लाइट इम्प्रूवमेंट इन हिज हेल्थ कंडीशन. आउ से एडभाइस कले
to Gopal's wife to offer him a little food, just like glucose and brandy. Few drops, few spoons, a couple of spoons will be sufficient. At this time, his wife, Gopal's wife, asked Dr. Raman, is he out of danger now? It is very common, very natural in case of women. साधारणतः स्त्री लोक मान पाखे यहाँ हूँ स्वाभाविक. They are very much worried, very much anxious about the health, happiness, well-being of their husbands. तेणु गोपाल स्त्री पचारुंट सार बर्तमान से विपद मुक्त कि. And we know that Dr. Raman was not a man of whitewashing, never tried to use some sweet words. Dr. Raman सेमती लोक नुहति जे कि लोकों मन को बुझाई किसी मिछ कहती अधुर कथा कहती. Now he said to Gopal's wife, time will come when you will see it yourself. समय आसो तो निजे जान. Don't ask me now. And with this, Gopal's wife went to the kitchen door and signaled Dr. Raman to go there, because she thought as if Dr. Raman was not going to tell her the truth before others. इतने परिवार अन्य माने समस्ते खुशी अछंती. दे वर रिलैक्स्ड, दे वर रिलीव्ड. समस्ते भावुंट गोपाल भल हो गला, आ किसी असुविधा नहीं. डॉक्टर रमन को जो गोपाल स्त्री पचारि बर्तमान से विपद मुक्त कि. तेणु डॉक्टर रमन तुम निजे जान बोली जो उत्तर देती. गोपाल स्त्री भाविले बोधे पेसेंट आगे अन्य मान उपस्थित डॉक्टर रमन किसी कहवाई चाहूना. तेणु से रोषे घर द्वार पाखक चलीगले और डॉक्टर रमन को टिके आसवाई संकेत देले. आ डॉक्टर रमन जो जाइछन्ती पचारे एगेन द सेम क्वेश्चन. तेणु डॉक्टर रमन evaded the answer, did not give the right answer because it was not his nature. ତେଣୁ with this, Gopal's wife started bewailing, started shouting, crying, and when Dr. Raman heard the wailing sound of Gopal's wife, he simply put her inside the kitchen door and came out. And this is the end of unit 4. Come to the next unit, the most important, the most crucial unit of the story. When Dr. Raman was in a dilemma, he was nonplussed, he did not know what to do and what to say. बर्तमान आम जो यूनिट 5 को जावा देखा डॉक्टर रमन एक द्वंद्व भितर पड़ जाती. से कौन करेंगे कौन ना कौन उत्तर देवे किसी जापर ना. तेणु लेट अस सी whether it is the nature of doctors to disclose the truth before the patient. डॉक्टर माने रोगीर अवस्था विषय सत्यासत्य रोगी आगे कहती कि obviously not. साधारण से रोगी कहती ना. बट लेट अस सी what was the case with Gopal and Dr. Raman. Now Dr. Raman, after shutting the door of the kitchen, keeping Gopal's wife inside, came and resumed his seat by the side of Gopal's bed. Dr. Raman गोपाल स्त्री को तुनी कर देकी किचन रे छाड़ी देकी आसी गोपाल पाखरे बस पड़ी. एंड यू सी because of this wailing, because of this loud cry by Gopal's wife, Gopal was awakened, he was excited, and Dr. Raman advised him ताको परामर्श दौरान कहीं ना गोपाल कौन कौन ना आई हर्ड समवन क्राइंग, ये कांदिला. डॉक्टर रमन कहते डोंट एक्सर्ट योर सेल्फ, एते प्रेसर नियो नहीं, एते टेंशन हो नहीं, एते बॉडी को एक्सर्ट करो नहीं. एंड यू मस्ट नॉट टॉक एट योर कंडीशन, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू टॉक नाउ. तुम जो स्वास्थ्य अवस्था अच्छी ये क्षेत्र में तुम कौन गपसप करवा माने मानसिक माने टेंशन आनिबा ये सब ठीक नुहे. तेणु नाउ यू सी
बर्तमान डॉक्टर रमन कौन करना जोठी बाघर भय से राति ना सेपटे गोपाल स्त्री तांको बारंबार से प्रश्न पचार इज आउट ऑफ डेंजर एपटे गोपाल कौन करुचे कौन कहे डोंट हाइड इट फ्रॉम मी आम आई रियली गोइंग टू डाई आम आई गोइंग मो पाखे किसी लुचाना मु कौन सतरे चलीजी यू सी व्हाट टाइप ऑफ ए क्वेश्चन हु इज डिस्टर्ब्ड डॉक्टर रमन बिकॉज ही was trying to save the life of Gopal by hook or crook. His level best he was trying. से पारु पर्यटन चेष्टा कर गोपाल जीवन को बचाई ताको आरोग्य करने किंतु गोपाल बारंबार पचारुची आम आई गोइंग डोंट हाइड इट फ्रॉम मी नाउ डॉक्टर रमन्स नेचर वाज नॉट टू हाइड वाश नॉट टू टेल ए लाई नॉट टू यूज स्वीट वर्ड्स मिछ कहवा स्वभाव नुहे कि कौन मधुरिया कथा कहीकि लोक संतुष्ट करवा स्वभाव नुहे तेणुक बारंबार कौन कर गोपाल कौच यू सी आई एम क्वाइट फॉर्चुनेट आई एम क्वाइट लकी दैट यू आर बिसाइड मी नाउ आई हैव केप्ट द विल रेडी एंड यू विल बी ए विटनेस एंड यू नो माय फैमिली अफेयर्स वेरी वेल माय यंगर ब्रदर सुबैया after my death will take away all my property, my wife, my children will be nowhere, they will be thrown to the street. Now it is high time that the will is signed before you. तमें जानिच मो परिवार समस्त सुविधा असुविधा जानिच आदि मो संपत्ति को गोटे इच्छा पत्र प्रदान न करुच्ची ताले मोर सान भाई जे सुबाया से कौन कर गोटे ही इज जस्ट लाइक ए वुल्फ गोटे हेटा भाया वो संपत्ति की से नहीं मोर स्त्री पिला राजा हस्ते भिक्षा मागे तेणु बिफोर इट इज टू लेट वी मस्ट डू समथिंग प्लीज टेल मी आम आई गोइंग तेणु एठी बर्तमान डॉक्टर रमन कौन करुना ही न्यू वेरी वेल द फाइनेंशियल कंडीशन द फैमिली प्रॉब्लम ऑफ हिज फ्रेंड गोपाल एंड ही इज debating inside, he is thinking inside what to do and what not to do. बर्तमान से मन भीतर चिंता करुँच कहीं गोपाल परिवार समस्त सुविधा असुविधा विषय से अवगत अच्छा कौन करेंगे कौन ना एंड इफ इट वाज नॉट हिज नेचर टू टेल ए लाई एंड अगेन हिज वर्ड्स वे आर जस्ट लाइक द वर्डिक्ट ऑफ ए जज तांकर प्रत्येक कथा माने रोगी मानक विचारपतिर विचार सदृश कौन करेंगे कौन नहीं जदि इफ ही सेड दैट यू आर नॉट श्योर अबाउट हिज लाइफ यू आर गोइंग टू डाई दैट मीन्स इट विल बी जस्ट लाइक ए डेथ सेंटेंस एंड द 1000 पार्ट ऑफ गोपाल सर्वाइवल विल बी गॉन जदि से गोपाल बंची रहा संदेहजनक बा गोटे नेगेटिव वे उपस्थापना करुँचे गोपाल जो बंचार जो 1000तम अंश सेरा चलीज ताने गोपाल विल पास अवे एंड अगेन ही वाज नॉट श्योर वेदर गोपाल वुड सर्वाइव और नॉट टिल द 8 नेक्स्ट मॉर्निंग राति 8टा पर्यंत से श्योर नुहति गोपाल बंचो बोली एटलिस्ट राति 2टा पर्यंत किसी कही हम ना आज ही टोल्ड हिज असिस्टेंट राति 2टा पर्यंत कही हेनी whether he would continue or not जदि सकाल 8टा बजे बंचला he can guarantee another 40 years of life to गोपाल राति 2टा पर्यंत जदि गोपाल बंचीगला बंचार चान्स रही बचापी चान्स रही सकाल 8टा पर्यंत बंचीगला ताहले आहरी 40 वर्ष आयुष बढ़ी तेणु बर्तमान राति इट इज अबाउट मिडनाइट तेणु बर्तमान गोपाल देखुच कौन से डॉक्टर रमन देखुं 8 2 hours left and if I say in the negative way the life of Gopal will be at risk and he is thinking what to do on his words depended the life the death of his best friend बर्तमान तांकरी शब्द उपरे तांकरी वाक्य उपरे तांकरी कथा उपरे तांकर से परम मित्र गोपाल रो बंचिवा मरिबा निर्भर करुछि now finally he decided
what if my words can save the life of a person, why not tell a lie? कहीं से बंचा मरवा कौन विषय सर्टेन नुहति सियोर नुहति जदि कथा गोटे लोकर जीवन बंची जाऊँगी परिवारटा गोटे असुविधा रक्षा पाई तेणु कहबार असुविधा किसी नहीं. इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ डॉक्टर अमन इज नाउ ट्राइंग टू act. He is trying to tell something about which he was not sure. तेणु से कौन कहते डोंट वरी अबाउट द विल नाउ. तब वर्तमान से जो विल से जो इच्छापत्र विषय व्यस्त हो नहीं कहीं ना यू आर गोइंग टू लीव. यू सी दिस इज द वैल्यू, दिस इज द वर्थ ऑफ डॉक्टर रमन्स वर्ड. रोगी मानकर आत्मीय लोक मैंने डॉक्टर रमन कथा को केते गुरुत्व दियंती केते मूल्य दियंती. आउ बर्तमान आम जानिबा बर्तमान डॉक्टर रमन कौन कहते देयर इज नो नीड टू साइन द विल नाउ. डोंट वरी अबाउट द विल बिकॉज यू आर गोइंग टू लीव. एंड यू सी व्हाट हैपेंड as soon as Gopal heard about it. He said if it comes from your lips it must be true. यदि सेटा तुम तुंडरू आसुची तामाने निश्चित भाव में सेटा सत होइथिबो. एंड वी सी ए न्यू ग्लो सफ्यूज्ड गोपाल्स फेस. वर्तमान तांको मुहरे एक नुआ ज्योति गोटे नुआ आभा पड़ी आसी. गोपाल वर्तमान डॉक्टर रमन कथा को संपूर्ण भाव में ग्रहण कर सत बोली मानुंट. And the doctor said, quite right. What I said, that is right. And you are improving every second. Sleep in peace. तुम प्रत्येक मुहूर्त तुम स्वास्थ्य उन्नति करुच्ची. आराम शांति शोई पड़. You see, Dr. Raman telling this much, he left the room of Gopal after midnight. And as you know, he had already advised Gopal's wife to give Gopal a couple spoon of brandy and glucose every 40 minutes. प्रति 40 मिनिट रे थरे गोपाल को 2 चामच ग्लूकोज और 2 चामच ब्रांडी देवाई स्त्री को परामर्श देते. वर्तमान गोपाल जेहेतु पूरा सुख निद्रा शोई पड़ी. डॉक्टर रमन after midnight left the house of Gopal and proceeded to his own. Now the end of unit 5. बर्तमान गोपाल आश्वस्ति लाभ करिछि. डॉक्टर रमनकर कथा सत बोली भाविकी से पूरापूरी शांति रे सोई पड़ी. आउ डॉक्टर रमन वर्तमान गोपाल घर छाड़ुछंती. Now come to the last unit and it is also very important, and here we can find out the true worth, the significance of Dr. Raman's words. बर्तमान देखा वास्तविक डॉक्टर रमन से प्रत्येक शब्द केमिति गोटे गोटे प्रतिश्रुति प्रतिज्ञार थिला. वर्तमान डॉक्टर रमन कौन कले went straight to his hospital and called the attendant, the assistant, and he advised him to go to the house of Gopal with a tube of injection, and in case the situation went worse, in case it was so necessary, in case the patient was struggling hard, at the last moment he should give this injection. बर्तमान डॉक्टर रमन तांकर हॉस्पिटल को जाइछंदी. आउ से जो अटेंडेंट से जो असिस्टेंट को जे कौन कहते तुम बर्तमान से लवली एक्सटेंशन को जो पेसेंट ता घर को जाओ सांगे से इंजेक्शन नहीं जाओ. जदि से दरकार पड़ा ये इंजेक्शन देदेव. ओके. एंड विथ दिस डॉक्टर रमन वेंट टू हिज ओन होम. चलीगले. नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 10 डॉक्टर रमन वाज अगेन बैक टू द हाउस ऑफ गोपाल. एंड यू सी द patient was awake and he was quite well, quite watchful, and the assistant reported satisfactory pulse rate. बर्तमान
गोपाल पल्स रेट पूरापूरी साटिस्फैक्टरी अच्छी संतोषजनक अच्छी डॉक्टर पुट हिज ट्यूब एट हिज हार्ट लिसन फॉर ए व्हाइल एंड टोल्ड दी सिक मैन्स वाइफ बर्तमान डॉक्टर रमन इज चेकिंग द पल्स रेट द हार्ट बीट ऑफ गोपाल हिज फ्रेंड आउ सब चेक कला परे से कौन कर गोपाल स्त्री कहते कौन डोंट लुक सो अनहैप्पी लेडी योर हजबैंड विल लिव टू बी 90 तुम्हें आउ व्यस्त हो नहीं गोपाल स्त्री की डॉक्टर रमन कहते तुम्हें आउ व्यस्त हो नहीं कहीं ना तुम स्वामी 90 वर्ष है पर्यंत बंचे यू सी फ्रॉम द कन्वर्सेशन बिटवीन द असिस्टेंट एंड डॉक्टर रमन वी गॉट टू नो if his pulse rate improved up to 8 in the morning he would guarantee his friend's life for another 40 years तेणु जदि तांकर पल्स रेटा गोपाल पल्स रेटा सकाल 8टा पर्यंत इम्प्रूव कर चलला से कही असिस्टेंट को आउरी 40 वर्ष तार हार्टा फंक्शन कर गोपाल आउरी 40 वर्ष बंचो नाउ से कौन कहते स्त्री गोपाल स्त्री की 90 वर्ष पर्यंत स्वामी बंचो ताने यदि आम 40 इयर्स माइनस करदे व्हिच वाज एश्योर्ड गारंटेड बाय डॉक्टर रमन ताने एट द एज ऑफ 50 गोपाल वाज इल एंड ही सफर फ्रॉम ए कार्डियक अटैक हार्ट अटैक तेणु 50 वर्ष बयस गोपाल हार्ट अटैक होइछि आउ ड्यू टू द सिंसियर एफर्ट्स एंड द ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर रमन he is now arrived, he has regained his consciousness, he has added another 40 years to his longevity. गोपाल वर्तमान तार जो हार्ट अटैक परे जो 40 वर्ष जीवन्यास पाई इट वाज ड्यू टू डॉक्टर रमन्स सिंसियर एफर्ट्स तेणु जितेबाला डॉक्टर रमन घर छाड़ी द असिस्टेंट एंड डॉक्टर रमन वे आर गोइंग टू the hospital, their own hospital, the assistant sitting by the side of Dr. Raman asked, is he going to leave sir? बर्तमान तांकर जे सहकर्मी तांकर गाड़ी पाखे साइड सीट बसुँच से को सारे सी कौन सत्य बचे डॉक्टर रमन कौन कहते आई विल बेट ऑन इट ही विल लिव टू बी 90 ही हैज टर्न्ड द कॉर्नर how he has survived this attack will be a puzzle to me all my life, replied the doctor. तामने definitely he is going to live for 90. And how did Gopal recover from this great shock? How did he turn the corner of his life? It is a puzzle, it is a surprise to me. गोपाल से जो मुहूर्त से मुहूर्त केमती से टर्न कले केमती से शॉक से उद्धार पाइले केमती से आरोग्य लाभ कले सेटा मो पाई सारा जीवन पाई एक सरप्राइज होकर रहिबो मो पाई सेरा गोटे मिस्ट्री होकर गोटे पजल होकर रहिबो कहीं ना ऑल्दो वी से डॉक्टर्स आर डेमिगॉड्स द सेकेंड गॉड्स स्टिल देन देयर इज समथिंग बिहाइंड दिस ट्रीटमेंट ऑफ ए डॉक्टर which designs which shapes the life of a person आम डॉक्टर मान को द्वितीय भगवान कहती द्वितीय भगवान बोली कहती से ट्रीटमेंट जो से चिकित्सा जो अधिकांश लोक जीवन्यास पाई मृत्यु मुखर बंची जाती तथापि से डॉक्टर मान जे कि अभिज्ञ जे कि ज्ञानी से जानते से हाथ में सबकि ना समथिंग इज pre-decided, pre-designed, something is there above them. से ऊर्ध्वे आउ किसी अच्छी जे कि लोक मान भाग्य से जीवन निर्धारण करुँची आठी से जो समथिंग डिसाइडेड द फेट द लाइफ ऑफ गोपाल वाज द पावर ऑफ डॉक्टर रमन्स वर्ड्स ये क्षेत्र में डॉक्टर रमनकर जो शब्द यू आर गोइंग टू लिव डोंट वरी अबाउट दैट विल सेटा गोटे मैजिक भाई काम करुँची गोटे करिश्मा भाई गोटे काम करुँची जहाँद्वारा कि बिलिविंग ऑन हिज वर्ड्स गोपाल टुक बैक हिज गॉट बैक हिज लाइफ
Okay, thank you all very much. Please don't forget to subscribe to my channel. I am going to discuss all the chapters one after another every Wednesday, and please wait for the video to be uploaded very soon. And if you want to know many more chapters, subscribe to my channel and share among your friends. Thank you all.